get drunk. क्या काम कर रहे हैं? हैंडल टाइप करना है। ये तो आज हम हैंडल टाइप करके मैं आपको दिखाता हूँ। धूप है बाहर, इतना अच्छा क्लियर आ रहा है फुटेज, लेकिन अंदर खराब हो जा रहा है। तो ये सेट कैसे करते हैं? पहले सॉकेट पाइप को बैठाना पड़ता है, उसी के बाद टाइट होता है। वाशर गलत ला रहा है ना। ठीक है, वॉशर अब उतना ये टाइट करने के बाद फेंक दे रहे हैं यार। ये बाहर का डाया ठीक है, अंदर का बड़ा है। कुछ होगा क्या दिक्कत उससे? दिक्कत यही होगा कि टाइट नहीं होगा ढंग से, उधर इधर उधर करके अंदर चले जाएगा। अंदर तो नहीं जाएगा, कम चांसेस है। फुल टाइट नहीं होगा, गाड़ी रख कर चलाओगे तो फेंक देगा। ओके, ठंड ठुन बजाएंगे, ठंड ठुन ठंड। पल्सर है, देखो पल्सर का आवाज देख रहे हो? बस इसको भी वही करना है। ढोलकी लगा देगा, बजेगा आवाज सेकंड सर।
उसका बेरिंग चेंज करना पड़ता है। तो दिनेश भैया हमारे जो है बेरिंग भी चेंज करा देते हैं, जैसे कि आपका क्रैंक को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती भैया, बेरिंग चेंज करा देते हैं इसका। क्यों भैया? दोनों काम हो सकता है, बेरिंग भी चेंज हो सकता है, क्रैंक भी सेट आता है। लेकिन भैया हम लोग को सस्ते में भी कर सकते हैं, जिससे काम भी अच्छा करेगा और खराब भी नहीं होगा। इसमें कम प्लेयर उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ सकती। क्यों भैया? थोड़ा कम प्लेयर रहता है, चल जाता है। 2 बाल्टी लाया गवर्नमेंट का स्वच्छ भारत अभियान के तहत। क्यों दिनेश भैया? दिखा बस आएगा मेरे को स्वच्छ भारत अभियान दिया तो मैकेनिक काम करने को फंसवा देगा। तो दोस्तों हमारे साथ है दीपक भी है, जो कि अभी हम लोग को लेथ में खोल के दिखा रहे हैं कैसे खोलना है। हो गया दोस्तों, देखिए भैया बहुत अच्छे से कर दिए हमारे दीपक भैया। आपको इनका एड्रेस अपने लोकेशन बॉक्स में डाल दूंगा। थैंक यू भैया। तो नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास आया एक नया प्रोजेक्ट जो कि है हमारा पल्सर फर्स्ट जनरेशन। दोस्तों ये हमारा सबसे पहला मॉडल है पल्सर का, जो कि आता था। इसमें तो सिंगल स्पार्क प्लग रहता है और उसमें सेल्फ स्टार्ट भी नहीं रहता है, पूरा मतलब हमारे स्पोक व्हील्स भी रहते हैं उसमें। दोस्तों आज इस प्रोजेक्ट में मैं इसको मॉडिफाई भी करूंगा, साथ में रिस्टोर भी करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसका जो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है उसको मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।